गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th का एग्जाम जो 2024 में होने वाला है उसके लिए मेरा आज का प्रैक्टिस लेक्चर होगा बायोलॉजी पोर्शन से। और बायोलॉजी पोर्शन में फर्स्ट यू हैव टू स्टडी लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस बच्चों न्यू बुक्स में चैप्टर 5 है, ओल्ड बुक्स में चैप्टर 6 है। तो आज लाइफ प्रोसेस का प्रैक्टिस लेक्चर 1 हम आपके लिए आपको समझाने आए हैं। तब तक आप इस हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो बच्चों लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ेंगे आज केवल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस में बी अलर्ट, क्वेश्चन को किस तरह से ट्विस्ट किया गया है उसको भी समझना है और तब आपको ऑप्शंस को सेलेक्ट करने हैं। तो चलिए हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ध्यान से, water in the root, here water in the root enters due to, मतलब रूट में जल एंटर करते हैं किस कारण से, व्हाट इज द रीजन, कैसे वो एंटर करते हैं। तो रूट का पहला ऑप्शन दे रहा है, रूट का फंक्शन ऑफ रूट इज टू एब्सॉर्ब वाटर। रूट का फंक्शन ही होता है वाटर को एब्सॉर्ब करना। सेकेंड ऑप्शन इज difference in concentration of ions between root and soil। रूट और सॉइल के बीच जो आयंस का कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है उसकी वजह से। तीसरा ऑप्शन है एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल में एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से। एंड डी इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन द रूट। वाटर रूट में डिफ्यूज कर जाते हैं। यू नो डिफ्यूजन इज पैसिव प्रोसेस, एनर्जी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। तो वाटर इन द रूट एंटर्स ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन, फंक्शन ऑफ रूट टू एब्सॉर्ब वाटर। ऐसा तो है नहीं कि रूट। सेकेंड ऑप्शन, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन रूट एंड सॉइल। रूट और सॉइल के बीच जो आयन के कंसंट्रेशन डिफरेंस होते हैं उसी के वजह से वाटर इन द रूट एंटर्स। दिस इज राइट ऑप्शन। ओके, ये राइट ऑप्शन है। और सेकेंड क्वेश्चन एमसीक्यू का जो है, एमसीक्यू का सेकेंड क्वेश्चन इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर डिपेंड्स ऑन, you know, leaves have number of stomata for the exchange of gases. Leaves have number of stomata for the exchange of gases. Exchange of gases takes place through stomata. Transpiration also takes place through stomata. यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमाटा की, स्टोमाटा में जो गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स निर्धारित करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर डिपेंड्स ऑन। मींस स्टोमाटल पोर का ओपनिंग और क्लोजिंग किस बात पर निर्भर करता है। फर्स्ट इज ऑप्शन इज योर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वायुमंडलीय ताप। दिस इज इनकरेक्ट। ओके। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अराउंड स्टोमाटा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अराउंड स्टोमाटा, यू नो, दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से गार्ड सेल का कुछ लेना, दिस इज इनकरेक्ट। सी, CO2 कंसंट्रेशन अराउंड स्टोमाटा, CO2 का कंसंट्रेशन स्टोमाटा के चारों तरफ, this is also incorrect. Water content in the guard cell, this is the right option. Water content in the guard cell. Okay, next question आपका है थर्ड क्वेश्चन, in which of the following group of organism blood flows through the heart only once during one cycle। one cycle के में एक ही बार हार्ट से पास करते हैं। आपके पास कुछ ऑर्गेनिज्म है, उनसे आपको सेलेक्ट करना है। यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम दीज ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट इज रैबिट। रैबिट इज ममेलिया, पैरोट इज एप्स, टर्टल इज, ये एम्फीबियन ग्रुप के, रेप्टाइल, फ्रॉग, टर्टल रेप्टिलिया में आ जाता है। और ये देखिए अब जो है बी ऑप्शन वो है फ्रॉग, एम्फीबियंस, क्रोकोडाइल एम्फीबियंस, और पिजन इज एप्स, पक्षी के ग्रुप में।
and C option is whale, labio, penguin, and D option is shark, stockfish, stingray. Okay, so this is D option. तो देयर आर फोर ऑप्शंस जिसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। तो बच्चों यहां पर ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस, तो बात है कि इन ऑर्गेनिज्म ऑफ टू चैम्बर्ड, जिस ऑर्गेनिज्म के पास दो चैम्बर्ड होते हैं उसी में ये केस देखने के लिए मिलता है। तो इसमें केवल और केवल हमारे साथ जो ऑप्शन है वो आपका सार्क, शार्क, कार्टिलेजिनस फिश, डॉग फिश और स्टिंगरे, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इनके पास दो चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस। शार्क, डॉग फिश, these are the organism. Okay, shark, dogfish, stingray, these are organism and which have two chambered heart and blood flows through the heart only once. They have the two chambered heart and so blood flows through them only once. एक ही बार ब्लड जो है इनमें फ्लो कर पाता है। These are the अभी 3 क्वेश्चंस एमसीक्यू के हम लोग बनाए। एमसीक्यू क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, रिवाइज एज फार एज पॉसिबल। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर। एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन सा चीज आपको ऑब्जर्व होता है, किस चीज, कौन सा चीज आप ऑब्जर्व करते हैं? ऑब्जर्व मतलब किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। Presence of oxygen, release of carbon dioxide, the characteristics process observed in anaerobic respiration. I am writing here in anaerobic. Here is observed in anaerobic. Anaerobic observed in एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व होते हैं? पहला हो गया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा हो गया रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड। तो बच्चों चूंकि रेस्पिरेशन कैसा है आपका? एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब यहां पर ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट की जरूरी नहीं है। दिस इज फुल्ली इनकरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। Second, release of carbon dioxide. Anaerobic respiration in case of fermentation, there is a release of carbon dioxide. Okay, ये तो होता है, this is correct. Release of energy मतलब 2 ATP इसमें बनते हैं anaerobic respiration के पश्चात, only 2 ATP molecules are formed. तो इसमें little bit energy मिलते हैं, this is also correct. And release of lactic acid during heavy exercise when we perform, तो मसल्स में ऑक्सीजन के अभाव हो जाने से पायरुवेट आपके लैक्टिक एसिड में बदल जाते हैं, तो लैक्टिक एसिड इज आल्सो हियर करेक्ट आंसर। तो व्हिच ऑप्शन आर देयर करेक्ट ऑप्शंस? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गए आपके 2, 3 एंड 4। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अगर वही एरोबिक हो जाता तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, बट रेस्पिरेशन इज एनारोबिक। सो ओके, तो यहां हमने बताया अप टू 4 क्वेश्चंस हो गए। एमसीक्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट हु आर अपीयरिंग इन 2024, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू।
Next question is question fifth question. That is फिफ्थ क्वेश्चन है एस्टोमैक हमारा एस्टोमैक ऑफ मैन मेनली डाइजेस्ट stomach of man mainly digest, that is first is क्या होता है कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट सेकेंड ऑप्शन इज योर प्रोटीन थर्ड ऑप्शन इज योर फैट्स वसा and fourth option is your sucrose. Okay, तो बच्चों स्टोमैक ऑफ ए मैन की जो स्टोमैक है यू दिस स्टोमैक ऑफ ए मैन मेनली डाइजेस्ट। तो स्टोमैक जो भी सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस, स्टोमैक के वॉल सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। इट कंटेन्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन विच गेट कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। यहां एक ही एंजाइम है दैट इज पेप्सिन। ओके, और पेप्सिन का काम क्या होता है टू डाइजेस्ट प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम। चूंकि मीडियम एसिडिक है, दिस इज ओनली एंजाइम व्हिच एक्ट इन एसिडिक मीडियम। आफ्टर दैट ये स्टोमैक में रहेगा तो सब बेसिक मीडियम में एक्ट करने रहेंगे। तो पेप्सिन इज द ओनली एंजाइम व्हिच एक्ट इन एसिडिक मीडियम ऑन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो प्रोटीन स्टोमैक में केवल और केवल मेनली डाइजेस्ट व्हाट योर प्रोटीन। ओके, अब नाउ अब एक अगला क्वेश्चन है, दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन फॉर फिफ्थ क्वेश्चन के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज which of the following which of the following has no muscular wall, muscular wall किसमें मस्कुलर वॉल नहीं होते हैं? मस्कुलर वॉल्स। ओके, इसमें जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो मस्कुलर वॉल? ए इज योर आर्टरी, बी ऑप्शन इज योर आर्ट्रियोल, सी ऑप्शन इज योर कैपिलरी, डी ऑप्शन इज योर वेन। ओके, तो बच्चों इन सबों में सबसे पतला इज योर कैपिलरी, वन सेल थिक, एक सेल का थिकनेस लिए हुए ये कैपिलरी हैज नो मस्कुलर वॉल। तो कैपिलरी बहुत थिन होते हैं, सो कैपिलरी हैज नो मस्कुलर वॉल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैपिलरी में कोई मस्कुलर वॉल नहीं होते हैं। ओके, अब सेवेंथ क्वेश्चन हम बनाएंगे। दिस इज कैपिलरी विच हैज नो मस्कुलर वॉल। कैपिलरी में कोई मस्कुलर वॉल नहीं होता है। It takes time. सेवेंथ क्वेश्चन, आपको सीक्वेंस को बताने हैं। सेवेंथ क्वेश्चन इज विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ which is the correct sequence which is the correct sequence of air passage
which is the correct sequence of air passage during inhalation. During inhalation. Inhalation. Inhalation means inspiration. This is inhalation. Okay. So inhalation means inspiration, or giving out carbon dioxide, that is air, is called, giving out foul air is called expiration. Okay. इंस्पिरेशन इनहेलेशन, मतलब जैसे सांस लिया हमने, दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन, एंड गिविंग आउट फाउल एयर इज कॉल्ड एक्सपिरेशन, और यू कैन से एक्सहेलेशन. तो which of the following correct सीक्वेंस आपका दे रहे हैं हम. फर्स्ट सीक्वेंस इज नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल तो सही है, नॉस्ट्रिल. सेकेंड कम्स लैरिंग्स. लैरिंग्स. थर्ड कम्स फैरिंग्स. Pharynx. Fourth comes your trachea. Trachea. Fifth comes your lung. Okay. This is the first. Second, providing you some more options. B. Nasal passage. Nasal passage first. Nasal passage. Then comes trachea. Trachea, then comes pharynx. Pharynx, then comes larynx. Larynx, and larynx के बाद alveoli. 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 See, I am providing you larynx, larynx, nostril, फिर नॉस्ट्रिल, फिर आपका फैरिंग्स. फैरिंग्स. फैरिंग्स के बाद लंग. दिस इज डी ऑप्शन इज योर नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल, फिर है फैरिंग्स, फिर है आपका लैरिंग्स. लैरिंग्स, और फिर हो गया ट्रेकिया. ट्रेकिया, एंड नाउ इज एल्वियोली. एल्वियोली. ओके. ये एयर पैसेज के सीक्वेंस है. कब के लिए? इनहेलेशंस के लिए. मतलब व्हेन यू इनहेल एयर, देन व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एयर. एयर का क्या सीक्वेंस है? तो बच्चों, नोस्ट्रिल के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद फैरिंग्स, फैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद लंग. नोस्ट्रिल, लैरिंग्स, फैरिंग्स, लैरिंग्स, फैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग. दिस इज इनकरेक्ट. nasal passage, trachea, pharynx, larynx, alveoli. Larynx के बाद alveoli. This is correct. Incorrect. This is also incorrect. लैरिंग्स के बाद नोस्ट्रिल, ये रिवर्स है. पहले यहां पर फैरिंग्स होता, सीक्वेंस ये है इस तरह से, तब जाके लैरिंग्स मस्ट बी हियर. अब लैरिंग्स के बाद नोस्ट्रिल, ये तो बिल्कुल गलत है. देन दिस सीक्वेंस इज करेक्ट. इनकरेक्ट. इनकरेक्ट. डी देखिए बच्चों, नोस्ट्रिल. नोस्ट्रिल के बाद पैसेज होता है फैरिंग्स में. After pharynx, it goes to larynx. Larynx, voice box. Trachea, windpipe. Then it goes to alveoli. Alveoli is richly supplied with blood vessels. तो वहां पर पहुंचता है लंग में. तो nostril, pharynx, larynx, trachea and alveoli. ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है. D option is your correct option. Okay, go through D. This is very. Our next option, next question is 8th question. Next is
Eighth question is एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। Eighth question, that is glomerular filtration. Glomerular filtration is possible because glomerular filtration is possible because ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पॉसिबल होता है क्योंकि क्यों होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? You have afferent and efferent arteriole. Afferent arteriole has less diameter, afferent arteriole has less diameter. Afferent arteriole की diameter क्या होती है? Less होती है than the efferent, efferent arteriole. B, afferent arteriole has more diameter than efferent arteriole. C, both have same diameter. Both have same diameter. D, none. Okay. तो बच्चों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस यू. देखिए थोड़ा सा, तो यहां इसमें जो है एफरेंट आर्ट्रियोल, इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है, और इफरेंट आर्ट्रियोल दिस इज एफरेंट, ये समझाने के लिए केवल बता रहे हैं. एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर अधिक होता है. दिस इज एफरेंट arteriole, और दिस इज इफरेंट arteriole. तो ये डायमीटर इफरेंट का कम है, एफरेंट का अधिक है, जिसके कारण यहां हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्टअप होता है लगभग 10 mg. दैट इज मतलब कि 10 मिलीमीटर का 10 मिलीमीटर ऑफ Hg, पारा के टर्म में 10 mm ऑफ Hg का यहाँ प्रेशर डेवलप हो जाता है. क्योंकि ये पतला है, ये मोटा है, इधर देखिए फैला हुआ है. तो एफरेंट आर्टियोल क्या होता है कि हैज मोर डायामीटर, एफरेंट की डायामीटर अधिक है और ले जाने वाला इफरेंट का डायामीटर लेस है. सो दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप, देन ग्लोमेरुलर filtration take place. Okay, so option B is your correct option. Okay, option B is correct. तो बच्चों ये चैप्टर 5 लाइव प्रोसेस प्रैक्टिस लेक्चर 1 केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस का है, और लेक्चर 2 भी हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा. वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद और थैंक यू.
आप लाइक करें हमारे चैनल्स को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।